Atul Muleji is here with us. Subodh Kumar ji is here with us. Thank you for joining here. Subodh Kumar is asking a question. He's 47-year-old. He has a dry cough sometimes, uh, which is associated with phlegm, which is yellowish, and also associated with headache for some time, about a month. He's suffering from sleep apnea and also from lung fibrosis. Do you have any advices for Mr. Subodh Kumar? Okay. So, dry cough associated with phlegm, we should find out the cause from where the source of the phlegm. It can be either from the lungs or from the sinuses. So, yellowish phlegm definitely it looks infected. So, he should take a course of antibiotic. They should take an X-ray of the sinus and X-ray of the chest to rule out both any sinus problems and lung problem. And commenting about his sleep apnea. So first, we should he should, if there is any obesity, the obesity should be reduced, the weight should be reduced, and he should concentrate on the core muscle exercises. That means exercises of the neck, chest and abdomen muscles. So क्या होता है, if there is an abdomen fat, so लेते टाइम वो लंग के ऊपर आ जाता है, जो फैट जो है बैठते टाइम वो नीचे है ग्रेविटी के वजह से, बैठते टाइम इट कम्स अप टू द चेस्ट. सो लंग को एक्सपैंड होके वो एयर अंदर लेने में लेने का जगह नहीं मिलता है. सो ऑक्सीजन लेवल कम्स डाउन ड्यूरिंग स्लीप और वो स्नोरिंग करने लगता है. सो वेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कि साइनसाइटिस के वजह से भी, वो नेसल कंजेशन के वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है, एनी सेप्टल डिविएशन और टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी, एडिनॉइड है या नहीं, नाक के पीछे जो टॉन्सिल है उसको एडिनॉइड बोलते हैं. सो एडिनॉइड का प्रॉब्लम है या नहीं वो भी हमें चेक करना है. सो स्नोरिंग का इवैल्यूएशन इज अ बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स which needs to be done along with the weight reduction. अभी जी के लिए सुबोध कुमार जी. एक्सरे needs to be done. जी, तो सुबोध कुमार जी, जैसे डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है और ऐसा लगता है कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो आपकी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को कहीं न कहीं बढ़ा भी सकती है। तो एक ईएनटी सर्जन को ज़रूर मिलें और अपनी नाक का टेस्ट कराएँ। कई बार हमने देखा है कि नाक के आसपास के जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं या लिम्फैटिक टिश्यू होते हैं, जिन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं, यदि वो बड़े रहते हैं तो उसमें भी ब्लॉकेज हो सकता है। ब्लॉकेज यदि हो तो वो ट्रीटेबल कॉज़ है, तो इस चीज़ का अगर इलाज हो सकता है, तो हेडेक जो आपको हो रहा है, जिसका कारण साइनोसाइटिस भी हो सकती है, उस चीज़ का इलाज संभव है। तो एक ईएनटी सर्जन से ज़रूर मिलें और ये सब चीज़ों का ध्यान रखें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं।